Okay, if denominator is greater than numerator, if denominator is 0 to 1. so the value lies between 0 to 1. So see, first of all, on the right hand side or the left hand side? Step number 2, tell me. On the right hand side or left hand side? Right hand side. On the right hand Right side. hand side. Yeah, perfect. Right Step hand number 2. Step number 2. Now, how many lines are there? See, 4. See the denominator. How many points are there? 4. Starting from there, 0, leave 0. Mark the points. 1, 2, 3, and the one number or the another number, any number coming here, 2, 3, 4. It should be the fourth part. Is it clear? Step number 3. Yes, sir. Yes, sir. Then Yes, sir. अब ये 4 parts है ना, 1, 2, 3, 4. It means 3 by 4. Which it will be? This is the first, this is the second, this is the third. Means it will be 3 by 4. Okay. And somebody asked me कि सर ये जो 1 है इस पे हम लोग फोर्थ पॉइंट क्यों ले रहे हैं? See, 4 by 4 will be how much? So 1. 1. That's why I said the fourth point will come on this one. Any doubt till here? No, sir. So, Coming to question number 8. First step, step number 1, identify numerator and denominator. Step number 2, is the denominator greater than numerator? 0 to 1. Yeah, right. Yes, sir. If it is greater than, denominator is greater than, it will be coming between 0 to 1. Identify. Then identify which side, left side or right side? Right Left side. side. Left side. Negative sign is there. Negative sign is there. It will be on the left hand side. So between, and how many parts are there? See, how many parts are there? 8. Okay, I'll just remove it. So just draw it according to it. How many lines should I draw it? How many lines should I draw? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 8 point will be the number 1. Any doubt? No, sir. Sir, it will be -1. Yeah, it will be -1 by 8. Yes, It will be -2 by 8. Yeah, it will be -1. It will be -3 by 8. It will be -4 by 8. -5 by 8. -6 by 8. And -7 by 8. And -8 by 8 So will be. means if there is the numerator is in minus, so we have to go in LHS. Yeah, no issue, no issue. You can go to, means if you need to see where is the negative sign. अगर आपको नेगेटिव साइन पता है तो आप एडजस्ट कर सकते हो. मुझे बताओ आपको क्या पूछा था उसने? आइडेंटिफाई करें -5 by 8. वेयर इज -5 by 8? डन? एनी डाउट? No, sir. No. Okay. Coming to next question, that is question number 3. Now, step number 1, -7 by 4. Identify. Numerator is greater or denominator is greater? Denominator. Numerator. Denominator. So value will be between 0 to 1 or more than 1? More than 1. Step number 2, it will be coming on left hand side or right hand side? Left hand side. Left hand side. How many numbers are there? See, 0 to 1, so greater than 1. So it will be between 1 and 2. 1 and 2. Okay, so how many parts should I draw? Denominator को देखो. 1, So 4. 3, and this is the fourth path. And fourth path में मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? यहाँ पे -1 था तो यहाँ पे कितना? -2. आपको समझा ये -2 क्यों लिखा मैंने? किसी को डाउट यहाँ तक? Any doubt till here? No. Now, So can I explain one more time? yeah, just wait. Just wait. Okay. Now, see, -7 is there. -7 by 4 is there. Okay. First of all, the numerator is greater than denominator. तो आप numerator, अगर numerator को minus छोड़ दो and denominator से divide करते हो 4 से, so you'll getting 1 point something like that. Means your value will be between -1 and -1 and -2. Now the question is, sir यहाँ पे तो -7 की वैल्यू है, फिर क्या करना है? तो कुछ नहीं, आप यहाँ से स्टार्ट करो. This will be 1, this will be 2, this will be 3, this will be 4. कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. Then No, sir. this will be 5, this will be 6, and this will be -7. Means minus should be there.
So it will be, this point will be minus 7 by 4. Minus 7 by 4. Okay? Nutan? Yes, sir. Similar question. 7 by 8. Mark it. Where it will be greater than 0 to 1 or more than 1? More than 1. 0 to 1. 0 to 0 1. to 1. Denominator is greater than numerator. So it will be between. So it will be 0 to 1. 0 to 1. right hand side or left hand side? Right hand side. How many parts should I draw? Right hand side. कितने parts नीचे draw करना है मुझे? Excuse me, 8. Yes, बेटा. I didn't got. 5, 6, 7 and this 8 will be written as 1. Okay, कोई doubt यहाँ तक? And then this will be 7 by 8. Sir, Done. I didn't got. Meera, you joined late in the class. No, sir. Beta, mute yourself. Yeah. पहले introduction देखो मीरा. You need to understand the introduction part. Then only you will be able to understand the means basics. Do one thing, Meera. Just give me a call after 5 o'clock. I'll explain to you this part. Okay. Yes, sir. Excuse me, sir. Yeah, Reet. Sir, can you explain the third one again? Third one. This one. Minus 7 by 4. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Draw a line first. Step number 1. Second, it will be coming on the left hand side or right hand side. Left hand side. Now, one more thing you need to understand. If you get this number like minus 7 by 4, it is greater than denominator. Numerator is greater than denominator. So it will be between 1 and minus 1. Minus 1 and minus 2. अब क्या हुआ, मुझे डिनोमिनेटर में कितने नंबर दिए? 4 नंबर दिए, मतलब 1 2 3 and this part will be fourth part. Any doubt? No doubt, sir. But the given number means you need to understand कि here will be same number 1 2 3 and this will be the fourth part. इतना पता है Reet? Yes, sir. इतना पता है. But he told you to take out minus 7 by 4. तो minus 7 यहाँ पे आएगा कि कहीं पे 7 डायरेक्ट आएगा कि नहीं? तो आपको स्टार्टिंग से चालू करना है. minus 1 by 4, minus 2 by 4, minus 3 by 4, minus 4 by 4, minus 5 by 4, minus 6 by 4 and minus 7 by 4. अब समझा रीत? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. Thank you. Come to question number 5. Okay, coming to question number 5, the points PQ, RS, TU, AB on the number line are such that TR is equal to RS, RS is equal to SU, and AP is equal to PQ and PQ is equal to QB. कोई डाउट यहाँ तक? Sir. पक्का? Yes, sir. Now find the P. Yes, sir. P अब कैसे आइडेंटिफाई करना है मैं बताता हूँ. अच्छे से सुनना. स्टेप नंबर 1, जो नंबर बोला है, जो पॉइंट बोला है उसको मार्क करो. दिस पॉइंट इज P. कोई डाउट यहाँ तक? फर्स्ट स्टेप, point mark it. How many sub points are there? 1 2 3 means 1 2 and 3. ये points mark करो. कोई डाउट? No, sir. जो जितने पॉइंट्स आते हैं उसको डिनोमिनेटर, ऐसा एक लाइन लो फ्रैक्शन टाइप में, इसको डिनोमिनेटर में लिखना. कोई डाउट यहाँ तक? किसी को डाउट यहाँ तक? ठीक है. स्टेप नंबर 2. स्टेप 2 में क्या करना, सबसे पहले सामने में कौन सा नंबर है वो आइडेंटिफाई करो. कौन सा नंबर है ये? विच नंबर इट इज? 2. 2 राइट हियर. ये जो लाइन है ना इसके बीच में. एंड P कौन से नंबर पे? उसमें 1 नंबर पे, 2 नंबर पे कि 3 नंबर पे? 1. 1. 1. 2 1 by 3, that is known as 3 into 2 plus 1 will be how much? 7 by 7 by 3. 7 by 3. the rational number represented by P is 2 1 by 3, that is 7 by 3. Don't worry, I'll give you one more chance. Next question, next part. What is the next number? Next point, what is the next point? Tell me. Q. 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 सबसे पहले where is the point identified? There is Q. Q को आइडेंटिफाई करने के बाद कितने सब पार्ट्स है उसमें? 1 2 and 3.
उसको कहाँ लिखना है? ऊपर नीचे बीच में कहाँ लिखना है? नीचे नीचे डिनोमिनेटर। नीचे सबसे डिनोमिनेटर पहले कहाँ से कौन सा नंबर पकड़ना है? सबसे सामने वाला। क्या नंबर है उसका? 2 2 कौन से नंबर पे आ रहा है वो? 1 2 या 3? 2. 2 2 तो या अगर 8 आप by ऐसे 3 लिखे तो चलता, या फिर ऐसे 3 into 2 plus 2 which will be how much? 6 plus 2 8 by 3. Any doubt? 8/3. 8 by 3 By 3. Any doubt? Preet, Sarthak, Naman. Sir, I didn't understood. अरे What? एक बार sir I have no doubt Step Yeah, number 1. one more time I'll explain you. Take, आपको कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई करना है? क्यू पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। तो पहले नोट डाउन करो वो कहाँ पे है। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir, no. ओके। no sir वो क्यू जो है यहाँ पे 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स है? सब पॉइंट्स उसको ऐड करो, 1 2 एंड 3, तो उसको नीचे लिख दो ऐसे। यहाँ तक कोई डाउट श्लोक? No, sir, no, no. अब उनके सामने में कौन सी लाइन, कौन सा नंबर है वो देखो, वो आइडेंटिफाई करो जिसके बीच में है ना, सबसे जो 2 एंड 3 के बीच में। तो टेक द फर्स्ट नंबर, व्हाट इज दैट? 2, सो राइट दैट 2 हियर। कोई डाउट श्लोक? No, sir, no, sir, no doubt. एंड वो कौन से पोजीशन पे? फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे? Third. क्यू second सेकंड पोजीशन पे, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है श्लोक? एंड मिक्स Yes, फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में क्या करते हैं? इन दोनों नंबर्स के बीच में क्या होता है? multiply. और ये नंबर को हम लोग ऐड कर देते हैं। कोई डाउट? सर अगर वो पी का तो हमने 3 लिखा होता ना। हाँ, बी लिया तो हम लोग 3, कोई नहीं बताता। वेट, टेक आउट दैट्स, टेक दिस आर। आर को आइडेंटिफाई करो। आर के आइडेंटिफाई करने वाले उसमें देखो कितने पॉइंट्स है, कितने सब पार्ट्स है? 1 2 एंड sir 4 by 3 जस्ट वेट हाउ मच इट विल बी? 1 2 एंड 3। सो डिनोमिनेटर में कितना आएगा नमन? 3। इसके 3 बीच में है -1 और -2। सबसे पहले कौन सा नंबर है? -1 आएगा कि -2 आएगा? -1 -1. एंड Excuse जो me, sir. हारित, How denominator 3? सी मैंने बताया, जो भी पॉइंट, जो भी नंबर है, ओके, आर की पोजीशन कहाँ पे? यहाँ पे है क्या रीत? Yes, sir. जो भी नंबर है -1 के बाद वो स्टार्ट हो रहा है इधर से, 1 2 एंड 3 ऐसे काउंट करते हैं। ठीक है रीत? Yes, sir. नाउ 3 एंड वो नंबर कौन सा है सबसे पहले? -1, तो मैंने लिख दिया। एंड कौन से पोजीशन पे? 1 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन से पोजीशन पे है? सर फर्स्ट फर्स्ट। तो हमारा First. आंसर क्या होगा? द रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय आर इज -1 1/3, दैट विल बी 3 into -1 plus 1. So it will be -3 plus 1 will be how much? -2. कोई डाउट? चलो याला खुद से बताओ, no sir एस वाला sir कितने? -5 by 3 जस्ट वेट, वैसे नहीं, स्टेप बाय स्टेप। डिनोमिनेटर में क्या आएगा बताओ पहले? कितने पॉइंट्स यहाँ पे? 1 2। सर डिनोमिनेटर 3 में Sir, 2 3. Sir, यहाँ 3 पे 3. आएगा यहाँ पे यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे? 2 सर नो -2 1 नो, 1 -1 -2 जीरो की तरफ -1, -1 और ऊपर में यहाँ पे 2 2 या। अभी किसी को डाउट? no sir no sir I've recorded the video. I'll put it in the YouTube. You can understand from there also. Okay. How many participants are there, Shlok? Aditya? सर Sir, 31 Sir, 30. sir 31 Question number 6. Which of the following pair represents same rational number? Okay. अब सबसे पहले कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ। वेट, एक एक करके। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले उन दोनों के पास सेम साइन होना चाहिए। जैसे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉसिबल है कि नेगेटिव पॉजिटिव सेम आएंगी वैल्यूज? No, sir. no sir Since -7/21 is a negative rational number, it is a, Negative rational number. and 3/9 is a, Positive rational number. Positive rational number. therefore the given pair does not represent, given pair does not represent the same rational number. ये फर्स्ट क्वेश्चन का है।
ठीक है, कोई डाउट? No, sir. No, sir. No अगर doubt. साइन सबसे पहले आइडेंटिफाई करना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ, ये वाले क्वेश्चन पे देखो, एक नेगेटिव साइन इसके पास भी, एक नेगेटिव साइन इसके पास भी है, कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? No, sir. नो। No, sir. अगर एक नेगेटिव साइन है तो इधर भी एक, दो इधर है तो दो इधर भी रहनी चाहिए, याद रखना। कोई डाउट? स्टेप नंबर 1 मैंने No, sir. आइडेंटिफाई, No doubt. स्टेप 1 क्लियर किया कि इसके पास एक नेगेटिव साइन है तो इसके पास भी आइडेंटिफाई करने के लिए। अभी -16/20 एंड सेकेंड इज 20/, 25 minus 25. 20/12 minus 25. पक्का? Yes. Yes, sir. अब सुनो मैं क्या बता, Yes, sir. यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, माइनस साइन, साइन है कि नहीं है? They both are same. Yes, अभी sir. भी याद रखना, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में माइनस साइन हटा के कहाँ लगाना पड़ेगा? डिनोमिनेटर। Denominator. सर हाउ वी कैन डू? Denominator. ये सिंपल ट्रिक है, इसको पहले सर मल्टीप्लाई करो। माइनस से ऊपर नीचे हो गया तो चलेगा क्या? नहीं, ऐसे कर दो, मल्टीप्लाई करो -1 से। अब मुझे तो मैंने बताया था माइनस और माइनस कट, कितना होगा वो? प्लस 16 by minus 20. 16 by 16 by minus 20. -20. -16 बाय, अब कितना हुआ? 16 बाय -20 आया कि नहीं आया? देखो डिनोमिनेटर हुए कि नहीं सेम दोनों के? Yes, sir. अब यस सर। ऐसे नंबर से उसको डिवाइड करो। अब इसको लोएस्ट फॉर्म में लाओ कि सेम नंबर आना चाहिए, ऐसे नंबर से डिवाइड करो जो दोनों के टेबल में आता होगा। Sir, 4. 4. Sir, 2. 4. Sir, 2. 4 16 and 4 5 are, The 4, 16 and 4 5. by 5. so 4 into 4 -5. by 5. 4 by -5. What is the second number? What is the second number? Sir, 4 by 5. Second number. What is the second number? 20 by 20 upon -25. Sir, 5. 4 ऐसा नंबर by बताओ, 5. ऐसा नंबर बताओ कि सेम मेरे को 4 and 5, 4 by 5 आना चाहिए। -5. Sir, 5. 5. Then the answer is -4 by 5. No, -5. it will be not -4. It will be only 4 by -5. 20 4 by -5. 4 by 4 by -5. ठीक है, तो मैंने आइडेंटिफाई किया दोनों का आंसर सेम आ रहा है, therefore the given pairs are the same. Given pairs represents Rational numbers. कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. No, sir. No, कम टू sir. क्वेश्चन नंबर -2 and 3. थर्ड क्वेश्चन, आप क्या थर्ड क्वेश्चन देख पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. क्या वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, हो सकता है क्या दो एक तरफ माइनस माइनस साइन है, No, एक तरफ sir. है ही नहीं? No, sir, नहीं हो सकता. No, sir, नहीं हो सकता. बेटा मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में, डिवीजन पार्ट में, if there are two things, this will be cut it down, so it will be how much? Now it is how much? 2 by 2 by 3 and 2 by 3. 2 by 3 है, 2 by 3. -2 by -2 multiply by -3 रहे या -2 by -3 रहे, माइनस माइनस will be cut it down, it will be 2 into 3, पॉजिटिव हो जाएगा ये। ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके, व्हेन आई एम कटिंग इट डाउन, सो अब मुझे -2 -3 को ऑफिशियली कट करना है, तो मैं एक्चुअली कैसे शो करूंगा कि -2 -3 कैसे कट होता है? बताओ, क्या मल्टीप्लाई करो तो कट हो जाएगा -2 -3? -1. Sir, -1. -1. So minus -1. minus cut, it will be 2 by 3 by 2. 2 by 3, 3. 2 by 3, and same here it is also 2 by 3. So those given pair represent natural number or not? Yes, sir, they are Yes, rational sir. number. The same rational number. Same rational number. क्वेश्चन नंबर 4, क्या उनको पहला स्टेप क्लियर कर रहे क्या? देखो दोनों साइड में एक ही जगह वैल्यू है कि माइनस माइनस? Yes, sir. sir. they are minus. Yes, sir. Yes, Okay. sir. ऑलरेडी इट इज इन द लोएस्ट फॉर्म। देखो ऑलरेडी एक सिंगल डिजिट में लोएस्ट फॉर्म है, तो इसको कोई आइडेंटिटी, इसको मॉडिफाई करने की जरूरत Sir, it is a pair. नहीं है. या इट So इज it is a pair of They are rational. also Sir, it is same a pair. rational number. Sir, it is a pair. यस यस यस। सी आइदर यू कैन रिड्यूस देम और आइदर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो हाँ समीक्षा, Sir, 4. Sir, 4 से multiply करो. Multiplied by 4. ज्वाइन नहीं कर पा रही थी तो अभी मैंने ज्वाइन किया था, आप रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे? यस 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 डेफिनेटली। थैंक यू ये सर। टू ऑप्शंस इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, एक तो आप इसके जैसा मल्टीप्लाई करो या फिर इसको जैसे डिवाइड करके लिखो। मुझे बताओ -3/5 को क्या ऐसे कि मल्टीप्लाई करके -12/20 ला सकता हूँ? किससे मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे बताओ? Multiplied by 4. मल्टीप्लाई बाय 4, sir. सर 4 -12/20, 4 सर। -12/20 सेम
Yes, sir. So Yes, the sir. given given pairs are rational numbers or not? So they are Yes, sir, they rational. are. अच्छा, Yes, sir. can you tell me about question number 5? Are the given pairs are rational numbers or not? Yes, sir, they are. So they are. Yes, Yes, sir, they sir. are. Question they number are. 6. Question number 6. Question number 6. Sir, they are not. They are not. not. Why? Sir, they are not. They are क्यों not the नहीं? rational numbers. They are not. Yes, Sir, sir. Because 1 by 3 is a positive Sir, rational there is number. minus 1 by 3 is positive rational rational number number Sir, and and there is minus a 1 by positive 9 rational is number negative and there is rational negative number. rational number. Negative. So the given pair of rational numbers will not be given pair will be not be given pair does not Rational be. Number. same rational number. Yeah, same. Rational numbers. Can you tell me about this part? Not rational. Very good. Who said it? Ansh. Very good, beta. Can you tell me about No, this? sir, not the same rational Sir, they numbers. are not. So they are Sir, not. they are not. They are not. same They are not rational number. Acha, minus Sir, 5 they by are minus not 5 minus 5 by minus 9 will be positive rational number or negative rational number? Positive The rational. positive. Positive rational number. कह रहा हूँ positive. मैंने बताया minus 5 Positive. minus 9 को हटाने तो मैं minus 1 से multiply करूँ तो क्या होगा? 5 by okay. 5 by And 9. here By I'm 9. getting and here I'm getting 5 by minus 9. So it will be not be a pair of rational number. Any doubt? Still, if you have any doubt, you No, sir. No, sir. perfect. Come to question number 7. Rewrite the following rational. Yes. I didn't understand the fifth one. Okay, fifth one. Okay, coming to fifth question. Sir, I didn't understand third one. First will be minus. One. Okay, wait. Sir, first will be minus 4 and Coming to fifth part. See, you have two options. You can do in the exam. I'll tell you two tricks. Okay. Minus. First trick. 8 into minus 5 is there. Okay. Now see, first of all, you need to bring that symbol, that negative sign at the either in the numerator, either in the denominator. आप अपने हिसाब से adjust कर सकते हो. So you need to multiply by such a number so that you should get values this. First step. Okay. It is minus 24 by 15. मैं किससे multiply करूँ तो minus 24 by 15 आएगा बताओ. 3. Perfect. But it is Sir, 3. whether it is 3 or minus 3. Sir, it should be 3. अगर मैं 3 से multiply करता हूँ, it will be minus 15 and it will be only plus 24 by 15. I just want minus 24 by 15. So what should I do? Negative 1. Okay, negative 1 she said. Sir, the negative 1. Okay. Also now negative 3. okay. So it will be minus 5 minus 3 will be positive 15 and it will be minus 24 by 15. So LHS is equal to RHS. Perfect. Any doubt? Yeah, Mira. Sir, I didn't understand how you did this trick. Okay. बेटा पहले क्वेश्चन को लिखो 8 by minus 5. नमन ठीक है? Yes, First sir. step, see what answer do you want? Minus 24 by 15 you answer you want? Yes. Okay. So I've written here minus 24 by 15 for a reference. Okay. Now you need to multiply by which number so that you should get 24 and 15. What should be the multiples there? Minus 3. Minus minus 3. minus 3 minus 3. You need to multiply both either in the denominator either in the numerator. So if I do 8 into minus 3 it will be minus 24 and 5 minus 5 into 3 it will be minus it will be not minus it will be positive 15. क्या आपको यही आंसर मिला कि नहीं मिला -3 मल्टीप्लाई करने पे नमन? Mila. So therefore the given pair of rational numbers exist. The given pairs represent the same rational number. It's like that. Naman, clear? Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Only you need to multiply with the number with the same number on both the sides, but you need to observe where the positive and negative plays an important role. वहाँ देखना पड़ेगा आपको. You don't get blindly trust on it and get the answer. Coming to question number 7. Just I'll take 5 minutes. Yeah. Yeah. Minus 4 by 3. Nah, just wait. Sir, minus 4 by 3. Very good, Meera. Very good, beta. Minus 4 by 3. 5 by 9. अब ऐसे Sir, 5 क्वेश्चंस by में 9. just wait, ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं ना, actually what happens, none of the question comes from the book. So you prepare only for the exam. Whenever you prepare in the exam, you prepare from books only. So always go for advanced level. See, first of all, remember the basics. Whatever I'm
टेलिंग द स्टेप्स जब मैं बताता हूँ उसको यूट्यूब से नोट डाउन करो. फर्स्ट स्टेप, step number 1. First is take the HCF. Take HCF. I taught you HCF and LCM. Take HCF of minus, means leave minus. Always if it is there minus 8, minus 6, minus को छोड़ दो. Only remember the numbers 8 and 6. तो मुझे तो HCF of 8 and 6 will be how much? Sir, 2. Sir, 2. Okay, 8 and 6 will be 2. Okay, I have taken the number. Now minus 8 by 6 को डिवाइड करोगे उसी नंबर से. Which number से? जो आपका HCF है. What is that number? Step number 2 it will be divide the number with Sir, the so the answer will be minus 4 by minus 4 by minus 4 by 3. Minus 4 by 3. Great. You need to tell me for the second part. Second question. 25 or 45. What is the first step? What should I do? What should I do? No, what should I do? Sir, sir, answer will be 5 by 9. Sir, 5 by 9. 5 by 9 or simply 5. No, take out the HCF of 5 by 9. सबसे पहले सर मुझे 5 and 9 का HCF निकालना है. Okay, what is 5. what is the HCF of 5 by 9? 5. 25 and 45. Just wait. What is the HCF of Just 25? 5. 5. Second step. What is the second step? You tell me. Second step में मुझे क्या करना है? Divide both the numbers. Divide both the numbers with 20. 5. Excuse me, sir. हाँ बेटा. Sir, can we 5 by search 9. the two numbers The that answer is they 5 by 9. comes in which table? Like 25 and 45 comes in हाँ. 5 table. Then हाँ. we have to search that. Is it a right way or wrong? It is a right way 50%, but you will not get the accurate answer. You need to find a perfect HCF. Okay. Similarly, minus 44 by 72. Now, for the big numbers, what you will do then? For the big numbers, what you will do? Then you need to remember the multiplication tables for that. So take out the HCF of 44 and minus 72. अब ऐसा नहीं होना चाहिए सर मुझे HCF नहीं आता है. So you need to go to YouTube channel. I have uploaded the videos. 44 by 72. What is the HCF of 44 by 72? It is not minus 72. It is minus 44. Okay, minus 44. Sorry, I just changed the negative value. For minus 44 by 72. Yeah, tell me the HCF. HCF means सबसे नीचे सबसे lowest number जो multiply divide कर सकते. Sir, 4. 4. So what 4. what should I do? Second step. Divide or multiplication. Sir, divide. So divide by 2. Divide both the numbers with Minus 44 divided by 4 it will be minus 11, and 72 divided by 4 will be minus 11 by 18. Minus 11 by 18. minus 8 by 10. Tell me the HCF of minus 8 by 10. Perfect. It's the homework for you. Let's have a competition. Who wins the race? Between Sir, both. 4 by 5. 4 by 5. HCF is No, it's not 4 by 5. HCF is 2. HCF is 2. HCF is 2. Yeah, HCF is 2. It's not 4 by 5. Anyone? Come on. Think about it. Read, Isha, Ashmi. So 2 is the HCF. HCF is 2. Sir, Yes. 2. Sir, Yes. minus Yes, 4 sir, by HCF 5. is 2. Sir, Very good, minus Meera. 4 by 5. Sir, Meera, minus good 4 stuff. minus 4 by 5. 4 by 5. Meera, Minus perfect. 4 by Meera. 5. Sir, Perfect, minus 4 by Sarthak. Perfect, Question number 8. Coming to question number 8. Should I take it? Sir, 2 by 3. 2 by 3. Just wait, Meera. Just wait, beta. Should I take it? Yes, sir. Sir, take Yes, 4 sir. 5 more minutes. sir, take 2 by 3. अब ऐसे क्वेश्चंस जब एग्जाम में आएंगे ना सबसे पहला बेसिक याद रखना स्टेप नंबर 1. जब whenever it asks you to compare, see the negative sign and positive sign. Who is greater, negative or positive? Positive. 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 आंख बंद करके आपको क्या करना है पॉजिटिव की तरफ ध्यान देना है. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में विच इज द ग्रेटर वन, minus 5 by 7 or 2 by 3? Sir, 2 by 3. 2 by 3. 2 by 3. But now in coming second question, so both are having negative value, both are having different denominators. तो क्या करना चाहिए बताओ? Sir, Minus 4 by 5. Sir, minus 4 by 5 is bigger. 4 by 5. But if they ask you, yeah, but if they ask you in the exam कि आपको प्रूफ करना है, तो आप कैसे प्रूफ करोगे? I told you. सर एलसीएम निकालिए LCM method. Very good. सर एलसीएम By the LCM method. कुछ नहीं करना. Same. I told you trick. LCM नहीं निकालना, डायरेक्ट निकाल लो. Denominators को multiply कर दो. How much it will be?
5 7 5 into 7 and 7 into 5. 35. 35. अब लिखो 30 दोनों नंबर्स को इधर -4 -4 by बड़ा 5 है एंड -5 by 7. मुझे कितना चाहिए? मुझे यहाँ पे कितना आना चाहिए डिनोमिनेटर में? 35 और यहाँ पे भी नीचे कितना आना चाहिए? 35. 35 35. Now multiply it with the numbers so that you should get number 35. 5 into it will be 5 here, it will be 7 here. It will be same number minus 28 by 35 and minus 25 by 35. Which is greater? Minus 28 by 35 or minus? Minus 28 by minus 35. So the answer is minus 25 is greater sir. Sir, minus Minus 25 by is 35. greater. Minus 25. जो नेगेटिव में जीरो की तरफ बढ़ रहा है ना उसको काउंट करते हैं. So it is minus 25 by 35. अब minus 25 by 35 कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? minus 4 by 5 या minus 5 by 7? Minus 5 by 7. Minus 5 by 7. minus 5 by 7. कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. Yeah. Yes. What you said? Sir, next is minus 7 by it by cross multiplication? Yeah. You can do it by cross multiplication also. No issue. But it should be clear. आधा अधूरा नहीं छोड़ना उसको. You'll be getting the maths. See, maths is all about steps. It's not about Third one is equal. Third one is equal. Perfect. Who said it? Brilliant. Excellent. See, without taking my help, you are able to solve it. Great. So we'll be completing how many questions? Sir, after that, it is minus 7 by 4. Okay. No issue. We'll complete it tomorrow. Tomorrow you will be continue all the question number 8. Yeah. I'll take in the question number 8. Don't worry. Thank you. Have a great day. Thank you, sir. Bye. Sir, when are